distinguished guests, industry leaders, esteemed speakers, and valued delegates, a very good afternoon. A warm welcome to the Future-Ready Aftermarket Conference, powered by MANN+HUMMEL, supported by Bilstein Group and Velvex, organized by Motorindia and Aftermarket and Service magazines as part of ACMA Automechanika New Delhi 2026, here at Yashubhumi, New Delhi. Today, February 5th, we gather to explore the evolving landscape of India's automotive aftermarket, focusing on next-generation vehicles and digital transformation. A sincere thanks to our sponsors, ACMA, Messe Frankfurt, our speakers, panelists, and all delegates for making this possible. Without further delay, let us begin. I now request Mr. Vikrampati Singhania, Mr. S. Murlidharan, Mr. Ramashankar Pandey, and Mr. T. Murli to join me on the dais. I now request Mr. N. Balasubramaniam, Executive Editor of Motorindia, to felicitate our respected speakers. Mr. Vinny Mehta, the Director General of ACMA. Please join me in a round of applause. Now I welcome Mr. T. Murli, Associate Editor, Automotive Vertical, Motorindia Group, for the welcome address. Please join me in a round of applause. Good afternoon and welcome to the conference. Respected dignitaries, distinguished guests, colleagues, friends, and industry leaders, a warm welcome. We are gathered here today for the conference on Future-Ready Aftermarket, built around the theme, transforming the automotive aftermarket, adapting to connected, competitive, and customer-driven era. Before I get into the agenda, I'm happy to announce that the conference is driven by Motorindia, the flagship publication for our group, which will be celebrating its 70th anniversary in a few months. 70 years of informing readers in the automotive industry. Now, the agenda. So the automotive world is changing rapidly. Electric, connected, software-defined vehicles are bringing new expectations and new challenges. Workshops are now expected to handle advanced electronics, digital diagnostics, and complex EV systems, all while dealing with supply chain disruptions, rising costs, and constant threat of counterfeit parts. All the leaders in the automotive industry are fighting for the counterfeit parts. Yeah, the skill gap is also widening, and customer wants faster service, digital convenience, and full transparency, especially when it comes to spare parts and repair. This evolving landscape makes technology adoption and workforce upskilling more important than ever. The future belongs to those who can combine strong technical capability with a smart, data-driven service. So that's the theme, and this is the context setting that I did. So after the inaugural, we will move into two panel discussions. The topic one is preparing India's automotive aftermarket for next-gen vehicles. And the second topic is managing digital transformation in the evolving tech era. I invite each one of you to participate wholeheartedly. I'm confident that today's discussion will spark new ideas, offer practical insights, and provide valuable discussions for every stakeholder. Thank you once again for joining us, and I wish you an engaging and meaningful conference. Thank you. May we have a louder round of applause? Thank you, Mr. Murli, for that warm and insightful welcome that truly sets the tone for today's discussions.
We now move forward with the presidential address. It is my privilege to invite Mr. Vikrampati Singhania, President of the Automotive Component Manufacturers Association of India, ACMA, to address the gathering. Please join me in a round of applause. Mr. Bala Natarajan, Motorindia, Mr. T. Murali, Associate Editor, Motorindia, Mr. S. Muralidharan, Chairman, ASPA and Mobility Aftermarket, Sri Ramashankar Pandeji, Mentor ACMA Aftermarket and co-founder Autoverse Mobility, colleagues from the industry, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Firstly, I must acknowledge that I've been a reader of Motorindia for a number of years, and I must congratulate you on the wonderful work that you've been doing over decades. So God bless and lots of good wishes. It's a pleasure for me to join you all this afternoon for this conference on Future-Ready Aftermarket, organized by Motorindia in the backdrop of the ACMA Automechanika New Delhi 2026. I congratulate the organizers for curating a timely and relevant platform that focuses on the forces shaping the next phase of India's automotive aftermarket. The theme for today's conference, Transforming the Auto Aftermarket, Adapting a Connected, Competitive and Customer-Driven Era, captures very well the transition of the sector that it is undergoing. Globally, the automotive aftermarket is being reshaped with the rise of electric, connected and software-defined vehicles. As vehicles become more electronic intensive and data driven, the aftermarket is no longer only about parts and replacement or mechanical repair. It is increasingly about diagnostics, software, electronics, skill, and the customer experience. The transformation is reflected in the scale of the opportunity. Globally, the automotive aftermarket is estimated to be close to $1 trillion, while in India, the aftermarket today is about $12 billion, growing at high single-digit rates. The growth is being driven by rapidly expanding vehicle park, longer vehicle life cycles, and rising expectations around safety, quality, and service reliability. India today has over 300 million vehicles on the road, spanning conventional internal combustion vehicles as well as the fast-growing base of electric and connected vehicles. As the vehicle population grows and becomes more complex, the role of the aftermarket in ensuring reliability, safety, and affordability of mobility is becoming even more critical. At the same time, this opportunity comes with challenges. Workshops today are expected to handle complex electronics, EV systems, and software diagnostics, often while dealing with supply disruptions, counterfeit parts, rising costs, and growing skill gap. Intense price competition and fast-changing technology further add pressure. Equally important is the changing consumer expectations. Consumers are now expect digital convenience, transparency, predictable pricing, and quicker turnarounds, whether they are purchasing spare parts or availing services. The aftermarket is becoming increasingly customer-centric, and those who adopt to this shift will be the ones that will succeed. This is where the idea of future-ready aftermarket becomes central. The future will belong to workshops and service providers that embrace technology, invest in continuous upskilling, and deliver a seamless data-driven service experience. Diagnostics, digital platforms, workshop management systems, and trained manpower will define competitiveness going forward. As India's economy becomes more globally integrated, including through our free trade agreements and deeper participation in global value chains, the aftermarket ecosystem will increasingly be required to service more advanced and globally benchmarked vehicles and systems. Preparing for that future must start now. From ACMA's perspective, the aftermarket is a strategic pillar of the automotive value chain.
A strong professional and technology-enabled aftermarket support demand for quality components enhances road safety, extends vehicle life, and creates large-scale employment. It also offers Indian companies the opportunity to formalize, scale, and move up the value chain. An important dimension of this evolution is the principle of right to repair, ensuring fair access to information, diagnostics, training, and quality parts while maintaining safety and compliance. Collaboration across manufacturers, suppliers, and service providers will be the key to making this work effectively. Platforms such as today's conference play an important role in this journey by bringing together industry leaders, solution providers, and practitioners. These discussions help build a shared understanding of where the aftermarket is headed and how the ecosystem can prepare collectively. Before I conclude, I encourage you all to make full use of the Automechanika New Delhi 2026 over the next few days. With over 850 exhibitors, more than 3,000 brands, and participation from 20 plus countries, it is India's most comprehensive aftermarket platform. For service professionals and workshop owners, it offers a valuable opportunity to see new technologies firsthand, interact with suppliers, and identify practical solutions to improve productivity, quality, and profitability. Let me end on this note with the future of the automotive aftermarket will not be defined by disruption alone, but by how effectively the ecosystem adapts through technology, skills, collaboration, and strong focus on the customer. Those who will prepare early will not only remain relevant, but will also lead the transformation. I once again congratulate Motorindia for organizing this important conference and wish you insightful discussions. Thank you and Jai Hind. Thank you. Can we have another round of applause for the... Thank you, sir, for that inspiring and authoritative presidential address, which has eloquently outlined the vision and priorities of our industry. We now move on to the keynote address. It is my honor to invite Mr. S. Muralidharan, Chairman of ASPA and Chairman of Mobility Aftermarket, to share his insights. Please join me in a warm round of applause. Mr. Singhania, friends, the 98,000 crore Indian automotive aftermarket is going through the kind of changes which has not been seen for decades. The changes is not just in the size of the market, but is in technology and the product portfolio, which will have a clear impact on the future. Let me throw some numbers to you. The potential of aftermarket taken as a block of 15 years compared to the previous 15-year block is 3 times more. If you take the vehicle park of the last 15 years, very, very approximate, the first 5 years is a BS2, BS3, maybe BS4 vehicles, which is about 40% of the vehicles still there. The ones in and around COVID is in and around COVID, 20-25%. And the last 3, 4, 5 years, the balance 35 is already Euro 6. Which means at a point of time in the Indian market, you're going to have 3 generations of vehicles, at least 3 kinds of fuels, which is electric, hybrid, traditional petrol, diesel, gasoline. और क्या बताऊं दिल्ली में बैठ के ऐसा मौका कहाँ मिलेगा फिर? The key question is, who's buying the vehicles? The bottom quartile of India, 250 million people, are ones who have come out of the poverty range in the last 10 years.
Surely sometime they want to have a two-wheeler. But the interesting thing is the one above, the 350 million people whose purchasing power parity at $12,000 is comparable, or 12,000 euros, 13,000 euros, is comparable to many of the European countries. And they are the ones who want to have not buddy gaddi, small car, nice bike, fancy stuff, but they roam around with a smart, should I call it watch or should I call it handy? Because nowadays you also have a smart watch. So they expect the smartwatch features in a small car. I call it German quality expectations, German quality, Chinese prices delivered at your doorstep. And don't you dare copy this, because I've managed to make sure that I've almost patented it. I've got an official copyright. This has an implication. The implication is a rapidly expectation increase. Where does the increase come from? And that comes from the width of vehicle park. If you take two-wheelers, again the same top quartile, bottom 25% or top 25%, 25% of two-wheelers in this country are in 44 districts. And we're all very happy. Normal 80-20, वो ठीक है, हम ये 40 cover कर लेंगे, good. The two-wheelers across the country are in about 450 districts. Remember that number. So from 44, it becomes 450. When it comes to cars, top 25 is in 19 districts. Very happy. 19 ही संभालना है. But when you want to take the total car park, it's more than 500 districts, which means the number of cars plying in the India is more widely dispersed than even the number of two-wheelers, which means not just Delhi has a car, but also maybe Mathura, but also Brindavan, not just Mumbai, Pune, Kolhapur, Padarpur. And there's a clear implication for this. The first implication, which we have to be future ready, is distribution. Just think, the word FTA was mentioned a bit earlier. Mumbai, Dubai is closer than Mumbai, Guwahati. Where would you like to buy your product from? Chennai, Colombo, or Chennai, Singapore is closer than Chennai, Chandigarh. Where will material go faster? So the basis of distribution will change due to this one factor. The second, because the spread is so wide, the traditional distributor जो बाला के फादर के ज़माने से कर रहा है, श्रीधर साहब और जो भी है, नटराजन साहब, जिन्होंने मुझे खास दोस्त हैं, that era has gone. The number of outlets, retailers, which is distributed or stocked by retailers of Bosch spark plugs is 100,000 retailers. The number of outlets which Maggi noodles is there is also around 120,000. So the auto components like filters, wipers, lubricating oil, spark plugs, bulbs are as widely distributed as noodles, chai, I don't want to say toothpaste. There's no difference when it comes to distribution. And here comes the catch. As a consumer,
I get via Blinkit or any e-commerce guys what I want in 10 minutes, 20 minutes. Swiggy, pizza, 20 minutes. So the same consumer, if you tell him this is a sophisticated technical part, you have to wait 1 week for it. पट्टे मुझे 20 मिनट में एक दवाई मिल जाती है, तुम बोलते हो 2 दिन लगेगा एक कलपुर्जे के लिए. This is the concept of a distribution which is changing and will fundamentally change. This change in distribution will have serious impact on our sales office structure. What is the role of a salesman? When telemarketing is replaced by digital. As I talk, I see half a dozen people punching something in WhatsApp. I'm sure there are people who have taken my photos and uploaded it in YouTube. Certainly, his talk would have been uploaded in YouTube. A more enterprising guy would have also put it in LinkedIn to show that I'm the first guy who has done it in LinkedIn. And poor Bala sitting here is wondering, what should I write so that people read my magazine? In this change of digital, you have little or no option for the retailer to be in touch with the company, the garages to be in touch with the company. So the role of the salesman changes. It becomes much worse when you have the new genes called AI. I grew up in a generation where AI means Air India. Oh, very simple. AI, Air India. Till in the last few months, I did courses on AI, artificial intelligence. And then I realized there's a Grok, there's a Meta, there's a ChatGPT-1, there's a ChatGPT-5. And I don't have to do any textbook. I can do my PhD by typing out my questions here. And if automotive aftermarket utilizes this powerful tool to give catalogs, repair instructions, delivery values, readings, it'll have a huge change. So which means, because of the size of the Indian market, the geographical disbursement, the presence of 3 generations of technology, multiple fuels with electric vehicles going up to hybrid, a demanding customer who says, I have an aspiration, and who says, I can get a medicine in 20 minutes, why can't I get a car part? The FTA is opening up the market. You have a choice. You can be future ready, which many companies have started, or people like me would say, read the book, Who Moved My Cheese? The choice is clear. But the real advantage is different. The companies which can tap this, the companies, distributors, garages, the value chain people who can tap this market, overnight will have the potential to sell across global south. Because if he can conquer the Kashmiri Gate in Delhi, surely he can conquer Kenya market or South Africa or Fiji Islands. And therein lies the opportunity. So I would rather say, aisa mauka fir kab milega, right? And youngsters would possibly say, sun baba sun, pyar ki dun, maine to aftermarket chun li, ab tu bhi mujhe chun chun chun. Dhanyavad, namaskar. Thank you, sir, for that comprehensive and forward-looking keynote address, which has provided deep clarity on the strategic direction for the mobility aftermarket. We now come to the final address of the inaugural session. It is my pleasure to invite Mr. Ramashankar Pandey, Mentor, ACMA Aftermarket, Executive Director, Paracoat, and co-founder, Autoverse Mobility, for his special address. Please join me in a round of applause.
Thank you, everyone. Thank you. For me, it's like a dream come true. I was just telling Singhania ji, my president in ACMA, and Murli sir, I had the privilege to work people like Naveen Paul, Murli sir in aftermarket when I entered Bosch. And जब भी सर ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ ब्लिंकिट क्यों नहीं हो सकता, so where is the future of aftermarket? And the dream come true is today's Automechanika is the grandest ever. I used to go to Frankfurt like a Mecca of aftermarket, This is how Bosch, Hella, ZF, you see all of us here. We used to see that why India cannot have this. And there was time when Automechanika was not in India. ACMA brought it. And with ACMA Automechanika together as a partnership, there was a gap between this Automechanika before and the ACMA Automechanika. The day it came, Pragati Maidan, I still remember the first conference. वो सपना उस समय, I think we could visualize how this will evolve. Today with 51,000 square meter of the place, विनी आपने 21 बोला तो हम लोग थोड़े वो हो गए, बाद में we knew, yes, it's double of last year, and नए हॉल बन रहे हैं. Imagine, we just heard that we are roughly 1 lakh crore market, after market. हमारी इंडस्ट्री को कोई कुछ समझता ही नहीं था. मैं ये सिंघानिया जी से बोलता था. जब मैं ज्वाइन किया तो हमें ये बताया जाता था कि एक समय ब्लैक मार्केट होता था आफ्टर मार्केट में. हेला के फैक्ट्री के आगे लाइन लगी रहती थी कि भाई हमें हॉर्न दे दो. बॉश में माइको बोलते थे उन दिनों. माइको में स्पार्क प्लग के लिए, प्लंजर के लिए एलिमेंट, डिलीवरी वाल्व, नोजल, डीजल की गाड़ियाँ होती थी ज़्यादा, तो लाइन लगी होती थी. और कंपनियों के जो बॉसेज होते थे, हमारे लोग जैसे जो कार्यकर्ता होते थे, वो राशन करते थे. और उन्हें जैसे अभी सरकार में हम लोग फ़ोन करते हैं, सर एक सीट दिला दो, तो वैसे फ़ोन आते थे. और मुझे आश्चर्य लगता था, ऐसा कोई दिन था जब हमारी ज़िंदगी शुरू हुई आफ्टर मार्केट में. 97 में मैं बॉश में आया, 98 से मैं आफ्टर मार्केट में हूँ, आज ये 28 साल होने को आया. तो हमें माल बेचने जाना पड़ता था, राइट. जब ये बदलाव हमने देखा, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, जब तक FTA साइन नहीं हुआ था EU के साथ, तो भरोसा नहीं होता था कि कब होगा. सुनते हमेशा थे, जैसे हो गया तो हमारी दुनिया बदल गई. ट्रंप का जब फ़ोन आया, तो जैसे जैसे आ रहा था, हम लोग सब अपने ग्रुप में व्हाट्सअप में चल रहा है, रात को कोई सो नहीं रहा है. जैसे ही पता चला एक फ़ोन आया, कोई सो नहीं रहा है, तो क्या हुआ, रात को मेरी वाइफ तो गुस्सा कर गई, बोली क्या ट्रंप फिर बात, क्योंकि हम लोग ट्रंप की बात हमेशा करते हैं. उनको क्या पता कि ये भूचाल आ गया हमारे लिए, और भूचाल के जैसा ही था. ट्रंप ने बोला आई एम हैप्पी विद इंडिया, ट्रेड डील डन. ऐसा कभी पहले होता नहीं था. तो दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिकल सिनारियो बदल रहे हैं, जिसको हम वूका बोलते थे अब बानी हो गया है, मतलब वोलेटाइल, कुछ पता ही नहीं कल क्या होगा. अब यहाँ जैसे हमारे 3-3 कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, सब कंफ्यूज है क्या हो रहा है. अरे मार्केट इतना बड़ा है, सबके लिए जगह है. और आफ्टर मार्केट में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है कि आफ्टर मार्केट के लोग, जो हम बोले आज ये सपना पूरा हुआ, आफ्टर मार्केट के लोग जो उस समय के थे और जो आज हैं, जो टेक्नोलॉजी का बदलाव. आज आप वर्कशॉप में जाओ, इंडिपेंडेंट गराज के वर्कशॉप में, मल्टी ब्रांड में, हम तो इसको गराज बोलना नहीं चाहते हैं. दे आर लाइक वर्कशॉप लाइक एनी अदर इंटरनेशनल मार्केट. गराज हम बोलते हैं कि इसको जहाँ पे गाड़ी हम पार्क करते थे, कि हमारे घर में एक गराज होता था. लेकिन गराज से हम वर्कशॉप बन गए हैं. आप देखना यहाँ ऑटो मैकेनिका के कोने में VIP लॉन्च के बगल में एक वर्कशॉप कॉर्नर है. ये बदल गया आफ्टर मार्केट हमारा. ये फ्यूचर कल नहीं है, आज है. ब्लिंकिट कल नहीं होगा, ब्लिंकिट आज हो गया है. मैं एटलीस्ट 2 कंपनी को जानता हूँ, जैसे आज ऑटोवर्स में मैं को-फाउंडर हूँ. 45 से 50 मिनट में गाड़ी खुलती है, गराज पार्ट्स का डालता है, और 45 से 50 मिनट में वो वहाँ पार्ट्स पहुँचा देता है. ब्लिंकिट ऑफ आफ्टर मार्केट है. देयर इज अनदर कंपनी, हम लोग बात कर रहे थे, 2 व्हीलर में यही कर रहा है. और ऐसी 5-10 कंपनी की जगह है जो हो सकता है. क्योंकि वर्कशॉप, जब हम लोग कमिटी बनाए ACMA में, आफ्टर मार्केट कमिटी, जैसे मैं उसका चेयरमैन रहा, शुरुआत किया, तो हम लोग बोलते थे ऑर्गेनाइज द आफ्टर मार्केट, स्टैंडर्डाइज द आफ्टर मार्केट, डिजिटाइज द आफ्टर मार्केट. कहीं ना कहीं हमने जंप ले लिया, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में हो क्या रहा है कि आपको पता है, हम OEM और काउंटरफिट के बीच में पिस रहे थे. क्योंकि OEM का आफ्टर मार्केट अलग होने का फ़ायदा OEM के बिजनेस मॉडल में है, क्योंकि उनके लिए OEM जेन्यून एक ब्रांड है. तो लोगों ने समझा जेन्यून केवल OEM के नाम से बिक सकता है.
जो OEM को सप्लाई करते हैं ACMA की इतनी सारी कंपनियां, अरे हम भी जेन्यून हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन था, बट ऑटो मैकेनिका के जरिए हमने ये बता दिया है, ACMA के जरिए हमने ये बता दिया है, आई एम ऑल्सो जेन्यून, IAM इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट इज ऑल्सो जेन्यून। और ये जेन्यूनिटी के लिए हमने जो इतना बड़ा छेड़ा स्टीयर करके हमने किया, हर रीजन में किया हमने स्टीयर, ट्रेनिंग पे काम किया। आज ASDC के लोग हैं यहाँ, वर्कशॉप के लोग हैं यहाँ, आपको पता होना चाहिए ACMA आपके साथ खड़ा है। तो जो फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट आने वाला है, आज हम लोग जाते थे फ्रैंकफर्ट ऑटो मैकेनिका में, आज ग्लोबल सारे फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं ऑटो मैकेनिका में। ये मैंने बदलाव देखा है। मुझे लिंक्डइन पे लोग बोल रहे हैं, मुझे ईमेल आ रही है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। न्यू दिल्ली ऑटो मैकेनिका, ACMA ऑटो मैकेनिका में आने के लिए, चाहे वो जर्मन्स हों, स्वीडिश हों, चाहे जितनी भी यूरोप की कंट्रियाँ हैं, एटलीस्ट यूरोप का तो मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा पुल है। तो फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट ये है कि इंडिया का जो बोलते हैं ना डिकेड या सेंचुरी आ गया, तो ये हमारे आफ्टर मार्केट के लिए भी आ गया। लेकिन जब इतने FTA साइन हो गए, जब ट्रेड डील हो गया, तो क्या हम जैसे थे वैसे ही प्रैक्टिस करके वो अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे? हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारी तैयारी अब फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जंप हो गया। किसने सोचा था इतनी जल्दी ट्रेड डील हो जाएगा? अब हमें US को भी सप्लाई करना है और हमें यूरोप को भी सप्लाई करना है। मेरे पुराने बॉसेस फ़ोन करते हैं, रमा प्लीज़ हेल्प मी, ये पार्ट्स मुझे सोर्स करना है इंडिया से। चाइना का रिश्ता दुनिया से एक अलग है और इंडिया का रिश्ता अलग है। आप सबको पता होगा, जब आप मिलते होंगे किसी भी कंट्री में, तो वो मानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रूल बेस्ड कंट्री है, जिससे पार्टनरशिप करने का फ़ायदा बहुत है। तो इतनी सारी पार्टनरशिप की फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, क्योंकि आफ्टर मार्केट इज अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट लिविंग द प्रॉमिस। एक समय था कि लोग अपना रिजेक्ट माल आफ्टर मार्केट में कश्मीरी गेट में ओपेरा हाउस में डाल देते थे, वो नहीं चलेगा। आप हमारे वर्कशॉप बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ आके माल पहुँचाओ, मैं अपने कस्टमर का ख्याल रखूँगा। और टेक्नीशियन जो पहले केवल हथौड़ा और छेनी लेके काम करता था, आज लैपटॉप पे काम कर रहा है। यहाँ तक कि वुमेन पार्टिसिपेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। आई नो मेनी टेक्नीशियंस, चाहे वो 2 व्हीलर के बाइक मैकेनिक हो या 4 व्हीलर के, दे आर नाउ कमिंग फ्रॉम द वुमेन जेंडर। ये समय, ये फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट है। तो फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट में सप्लाई चेन तो आप देख ही रहे हो कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो सबके लिए हो रही है, लेकिन आफ्टर मार्केट के लोग बदल रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अपने को स्टूडेंट मानता हूँ, चाहे वो नवीन पॉल सर के समय से हो, मुरली सर के समय से हो, या आज भी हम सब लोग आपस में जो पीयर ग्रुप मिलते हैं, हमें रोज़ कुछ सीखने को मिलता है। आज मोटर इंडिया का अपना एक आफ्टर मार्केट का मैगजीन हो गया है, आफ्टर मार्केट सर्विस। ये है नया आफ्टर मार्केट। तो नया आफ्टर मार्केट आने में टाइम तो लगा है। क्या मैं 28 साल से जो देख रहा हूँ वही अगले 3 साल में उसी लीनियर में जाएगा? नहीं, इट विल नॉट बी ए लीनियर ग्रोथ। जैसे अभी बात हुई डबल की, तो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स। हम 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। ACMA में जो हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं, 1 लाख करोड़ का हम आफ्टर मार्केट टर्नओवर करते हैं। अभी आप देखो, हमारे कंपोनेंट के अलावा टायर, बैटरी, लुब्रिकेंट, अगर आप तीनों को जोड़ दो तो हम करीब 3 लाख करोड़ के मार्केट है। इट्स एन इंडस्ट्री इटसेल्फ, सच ए बिग इंडस्ट्री। तो हम आफ्टर मार्केट अब आफ्टर थॉट नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दिस इज फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट, कि कंपनियों के अंदर में आफ्टर मार्केट प्रोफेशनल भी विजिबल हो रहे हैं। बहुत कम मौका मिलता था कि आफ्टर मार्केट के लोग कंपनियों के MD CEO बनते थे, अब बन रहे हैं। आपको दिखेगा कि आफ्टर मार्केट के लोग, दे आर इन द सी सूट, दे आर मैनेजिंग, क्योंकि अब यहाँ भी तकनीकी, यहाँ भी HR प्रैक्टिसेस उसी लेवल का हो रहा है। और OEMs आफ्टर मार्केट में आ रहे हैं। अभी मैं इनॉग्रेट किया एक बूथ स्टेलेंटिस का है, यूरो रिपेयर करके वो लोग अपना चेन यूरोप में लेके आए हैं और अब इंडिया में लेके आ रहे हैं। अभी मैं गया, टोयोटा का एक इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट का मल्टी ब्रांड गराज शुरू हुआ T-Serve के नाम से। तो आप याद करो, एक कार नेशन का टाइम था, मारुति के MD आफ्टर मार्केट को बदलने में नाकामयाब रहे। बहुत मेहनत की उन्होंने, CCI में केस किया, सब कुछ हुआ, बट आज का फ्यूचर ऑफ द आफ्टर मार्केट है। आप देखो, सब मिल के चल रहे हैं। जो हम एक कंपटीशन के जरिए में थे, आज कोऑपरेटिशन कर रहे हैं। आज OEMs, FADA हमारे साथ है। FADA ने
एक प्रयास नाम की ट्रेनिंग पार्टनर है ASDC के साथ मिलकर के एक 5000 टेक्नीशियन ट्रेनिंग का MOU किया अपने एनुअल इवेंट में, मैं था वहाँ। तो इसको बदलाव नहीं तो किसको बदलाव बोलेंगे? बदलाव ये है, हमें जड़ बदल गई है हमारी। अब जो आप देखेंगे वो मल्टीपल देखेंगे। ऑर्गेनाइज, स्टैंडर्डाइज, डिजिटाइज का जो हमारा एक सपना था, ये अब कल नहीं आज पूरा हो गया है। आप देखेंगे सब बूथ पे आप जाइएगा, एवरीबडी इज टॉकिंग इंजीनियरिंग कि API ग्रेड का ऑयल है, सिंथेटिक में ये इस 20W40 है या 15W40 है। आज टेक्नीशियन बात कर रहा है, सर आप तो ठीक है, आप ये ब्रांड बोल रहे हो, वो ब्रांड बोल रहे हो, आप ये बताओ स्टैंडर्ड क्या है, ISO का कौन सा आप ले रहे हो, आज ब्रेकिंग में क्या स्टैंडर्ड है, पैड्स का लाइफ फ्रीक्वेंसी अलग बताओ, पहले ये बताओ क्या ये टाइप अप्रूव्ड है। आज हेडलैम्प में अगर OE में वो टाइप अप्रूवल जा रहा है, COP जा रहा है, तो आफ्टर मार्केट में बोलते थे कुछ भी चलेगा। अब नहीं, अब यहाँ तक कि OEMs को अच्छा लग रहा है। मैं तो OEMs के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी विपदा है, आप सबको पता है कि हम सब सड़क पे चलते हैं, करोड़ों लोग चलते हैं, हर रोज 474 से ज़्यादा परिवार अपने लोगों को वापस नहीं पाता है। हर रोज आप सोच के देखो, एवरी डे, डे आफ्टर डे 500 के आसपास लोग सुबह तो निकलते हैं, शाम को पहुंच नहीं पाते। आपको आश्चर्य होगा 20% ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, इसको मैं एक्सीडेंट बोलता नहीं हूँ क्योंकि इंडिया में इट्स लाइक इंसिडेंट्स, इट्स नॉट लाइक आपके हाथ में नहीं है, हम मेहनत करें तो इसको बदल सकते हैं। ये जो इंसिडेंसेज हो रहे हैं 20% हमारे स्पूरियस पार्ट्स, काउंटरफिट पार्ट्स। ACMA ने स्टडी कराया था। आज ACMA पिछले 15 साल से मैं मानता हूँ अनवरत मेहनत कर रहा है, अनवरत। आज ऑटो मैकेनिका के साथ हम लोग मिले हैं, इंडिया एक अलग मार्केट है, यहाँ पे काउंटरफिट्स बहुत हो रहे थे। तो ACMA के असली नकली के कारण, ACMA सेफर ड्राइव के कारण हमने कितना बदलाव लाया। तो OEM भी ये समझ गए कि अगर हमें लोगों की जान बचानी है तो हमें लास्ट माइल, आपने मेट्रो बना दिया इतना अच्छा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो मेट्रो में कोई नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से आफ्टर मार्केट इज द लास्ट माइल ऑफ OEMs। हम कस्टमर के सबसे नज़दीक हैं, हमारे गराज चप्पे चप्पे पे हैं, हमारे 3 लाख से ज़्यादा अच्छे गराजेज हैं। अब आप सोचो 3 लाख से हम पूरे कंट्री को नाप सकते हैं। आज OEMs के अगर 25,000 30,000 अगर 4 व्हीलर में आपके ऑथराइज वर्कशॉप हैं, तो ये ऑथराइज वर्कशॉप और हमारे 3 लाख, हम क्यों नहीं साथ चल सकते? तो मैं आज ये गुजारिश करूँगा मोटर इंडिया के इस सेमिनार के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने आज से 15 साल पहले भी इसका आगाज़ किया था, आज हर साल मैं करता हूँ जहाँ मौका मिलता है। इसको कंपटीशन ना करें, इसको कॉपरेट एंड कॉम्पीट। हम बैक एंड में कॉपरेट करें, फ्रंट एंड में कम्पीट करें। फ्रंट एंड में सब अपने अपने ब्रांड के लिए लड़ें, जितने सड़क पे आप मेहनत करेंगे उतना माल बिकेगा। लेकिन ट्रेनिंग में, रोड सेफ्टी में, स्टैंडर्ड लाने में, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में हम इकट्ठा काम करेंगे। नहीं तो हमारा एनर्जी पीछे आपस में ही फ्रिक्शन हो रहा था। और जीत कौन रहे थे? जो लोग झूठ बोलते हैं, जो नकली काम करते हैं, सब स्टैंडर्ड पार्ट्स बनाते हैं, वो लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को भी ऊपर नहीं आने दे रहे थे। अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो, टाइप अप्रूवल लेके आते हो, COP लेके आते हो, और वहीं पे कोई और बोलता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप प्राइस क्या रखोगे? मैं आपको आश्चर्य बताऊंगा, यूरोप में हम जितनी भी कंपनी के साथ मैंने काम किया, वो एक अच्छा मार्जिन कमाते हैं आफ्टर मार्केट में। बोलते हैं कि आफ्टर मार्केट इज अ कैश मशीन। आफ्टर मार्केट से कई बार पूरे प्रॉफिट का डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो आफ्टर मार्केट से आता है। क्यों? क्योंकि OE में मेहनत करना पड़ता है, OE में प्राइसेस नहीं मिलते हैं। यहाँ इंडिया में मामला अलग है। यहाँ हमारी आफ्टर मार्केट की टीम को कोई बोर्ड मीटिंग में पसंद नहीं करता, बोलता है भैया क्या लेके आ रहे हो, इतनी तो मेहनत करा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप इतनी जगह मीटिंग कर रहे हो, इतना सारा आप मार्केटिंग कर रहे हो, इतने वर्कशॉप को सपोर्ट कर रहे हो, वर्कशॉप आपको दे क्या रहा है? मार्जिन आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। तो जब स्टैंडर्ड आएगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो दैट इज गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ आफ्टर मार्केट। तो मैं जितना समय आज मुझे मिला, मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है आफ्टर मार्केट को, स्टैंडर्डाइज करना है, डिजिटाइज करना है, तो इसमें हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। OEM, FADA, अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो FADA, ACMA, ये दोनों एंड पे हैं, OEM बीच में है। आप ये देखो, ACMA is supplying parts to OEMs,
they do the assembly and technology, and then FADA sells the car, FADA does aftermarket, और ACMA का एक दूसरा विंग है जो B2C विंग है, जिसको हम कंज्यूमर अफेयर्स बोलते हैं, आफ्टर मार्केट बोलते हैं, वो FADA के साथ कदम से कदम मिला के काम करता है. अभी रोड सेफ्टी में सब मिल के प्लेज लिए, कितनी अच्छी बात है. तो अगर हम साथ आने के कुछ दिखा पा रहे हैं, तो इसमें आगे बढ़ना है. और फ्यूचर ऑफ द आफ्टर मार्केट में टेक्नीशियन इसके सेंटर में होगा, वर्कशॉप इसके सेंटर में होगा. वर्कशॉप को हम सब रिपोर्ट करें, मैं तो यही गुजारिश करूंगा. वर्कशॉप जो चाहता है हम सब उनको रिपोर्ट करेंगे, वो जो मांगे हमें देना चाहिए. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वर्ल्ड का एक ऐसा आफ्टर मार्केट बनाएंगे कि यहाँ से फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्या क्या? केवल पार्ट्स नहीं, हम डायग्नोस्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गाड़ी की वैरायटी है. अभी मुरली सर ने कहा BS4 भी है, BS6 भी है, हमारे पास डीजल भी है, EV, सब कुछ. इंडिया डाइवर्सिटी का देश है. तो हमारी जो चीज़ यहाँ टेस्ट होगी, जो मैं इंडिया में हॉर्न टेस्ट करता था दुनिया में कहीं फेल नहीं करता था, क्योंकि हॉर्न ज़्यादा यहीं बचता है. बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका एब्यूज़ यहीं होता है. तो आफ्टर मार्केट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट हम बनाने की काबिलियत रखते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो जब हम इकट्ठा होंगे, चाहे वो FADA, ACMA एंड सायाम हो, ASDC ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है, इट इज़ promoted by 3 of us. So why not we together make aftermarket as a collaborative effort, make it happen that together we conquer Indian aftermarket with standardization. Counterfeit से लड़ें, spurious से लड़ें, OEM aftermarket आपस में ना लड़ें, दोनों aftermarket grow करें और हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें. क्योंकि FTA है, प्राइवेट लेवल बन रहा है. इन कंपनियों को जब एक्सपोर्ट का मार्जिन का मजा आएगा तो हम वर्कशॉप पे खर्च कर सकते हैं और वर्कशॉप को अपग्रेड कर सकते हैं. वर्कशॉप को बहुत ज़रूरत है रिपेयर, मेंटेनेंस, इंस्ट्रक्शन की, जो उनको नहीं मिलता है. कैटलॉग नहीं मिलता है, क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं मिलती है. आज ऑटोवर जैसी कंपनी जिसका मैं फाउंडर हूं, हमारी जैसी कंपनी इसमें पूरा जान लगा दी है. मुझे उम्मीद है कि सारी कंपनियां मिलके जब इकट्ठा हो जाएंगे तो आफ्टर मार्केट अपने आप में एक 3 लाख करोड़ से जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे एक 10 लाख करोड़ का मार्केट होगा. विद दैट एज ए गोल फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर, आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू. आई थैंक ACMA Automechanika, आई थैंक Motorindia for bringing all of us together, and I salute the workshop community, especially IVA. I just entered the hall and they put this badge to me. हम लोग बात ही कर रहे थे राइट टू रिपेयर का. मंत्री जी हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इतना अच्छा भाषण उन्होंने दिया हम लोगों को स्टीयर में. उनकी अगर भाषण आप दे ले, एक एक वर्ड बताता है कि इंडिया कहाँ जाने वाला है. राइट टू रिपेयर इज हेयर नाउ. ऐसा नहीं है कि एक OEM से मैं बात कर रहा था, बोले राइट टू रिपेयर, हा, ऐसे वो हंस रहे थे. इनफॉर्मली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज वो भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है लास्ट माइल कंज्यूमर एक्सपीरियंस इसी से होगा. तो ये एक विन 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 है. OEM भी जीतेंगे, हमारे आफ्टर मार्केट इंडिपेंडेंट वाले भी जीतेंगे, FADA डीलर्स जीतेगा और वर्कशॉप इसको ड्राइव करेगा. सेंटर में वर्कशॉप है. तो मेरी गुजारिश है कि ये जो आईवा जैसे जो इंडिपेंडेंट एक गराज एसोसिएशन है, मैकेनिक के बहुत सारे एसोसिएशन इंडिया में हैं, हर शहर में एक एसोसिएशन है. हम लोग पटना में स्टीयर किए थे, पटना में हम लोगों ने एग्जीबिशन किया था, वहाँ के 2 व्हीलर मैकेनिक का एसोसिएशन है, हमने उनको इन्वाइट किया था. इन सब को हमें जगाना पड़ेगा और ACMA के स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ACMA का अपना एक स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है. ये सारे टेक्निकल एसोसिएशन को हम लोग मदद करेंगे कि ये एक ऐसे स्टैंडर्ड पे आ जाएं कि हम लोग इनको ग्लोबली प्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंटेबल बनाएं. विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू. गुड लक फॉर द कॉन्फ्रेंस. Thank you so much, sir, for that enlightening and energetic special address, which has aptly framed the key opportunities ahead. Now I request Mr. T. Murli, sir, to present mementos to our distinguished speakers. May I please welcome Mr. Vikrampati Singhania. Please join me in a round of applause. Now, Mr. S. Muralidharan.
May I also invite Mr. Vinny Mehta to come up on the stage to receive the memento. Can we have a huge round of applause for them?